Good morning, everyone. Good morning, everyone. Can you all hear me? Sir. Yes, sir. Okay. So let's begin. Last time we were at some point, like we were discussing about the different terms that are used usually in enzyme studies. So let me share the screen. Okay. This cannot be shared. Well. Is it okay? Is it visible? Yes, sir. Okay. We were somewhere over here, right? Somewhere here. We were discussing the different terms used in enzyme studies. So I think we have already discussed it. And apoenzymes, you must be knowing what it is exactly. The protein portion of an enzyme that is lacking a coenzyme, cofactor or coenzyme. When a cofactor or coenzyme is not there, that portion of an enzyme is called the protein portion. Is called apoenzyme, right? And if some coenzyme or cofactor is attached with it, we call it holoenzyme. And coenzymes can be of different types, cofactors can be of different types. They could be organic, they could be inorganic also. So if they're organic compounds and non-proteinaceous in origin, they would be called, usually in many of the books, they are termed as coenzymes. And rest are called cofactors. And cofactors could be of two different nature. If they are loosely bound, temporarily bound with the enzyme, they all fall in one category, because those who are which are loosely bound with the enzymes, they usually get separated when the work is done, right? But in some cases, in some enzymes, the coenzymes or the cofactors are permanently attached with uh, the proteinaceous enzyme portion. So those are called prosthetic groups. Okay, so prosthetic groups. Okay, and what is this? The another term is allosteric enzyme. Allosteric enzyme is that kind of regulatory enzyme whose affinity for its substrate is affected by the presence of and absence of the molecule. Let me
tell you like this. Suppose there is an enzyme A, enzyme A, okay, and it acts upon a substrate called S. Enzyme A acts upon substrate S, and after the process is over, the catalytic action is over, the reaction is over, we get two products called S1 and S2. Okay, so the enzyme is acting upon a substrate which delivers two products called S1 and S2. And what is exactly uh, life processes, like some enzyme is acting upon a substrate called S, and that substrate S is converted into S1 and S2, in which out of which S1 is used. Okay, it's been consumed, and S2 is a byproduct which is usually produced during the reaction. And if there is no S1 in that region for the consumption, right, then only the enzyme would act upon enzyme A would act upon substrate S, right? But this message has to be conveyed by some mechanism, right? So how does it get done? So what happens when the substrate, suppose there is a need of S1 product, then the enzyme, we are not concerned about the factor or the condition or the process by which it has got the message that it has to prepare S1. Okay, we'll come to that. So S1 is required, and for the requirement of S1, we need enzyme A to act upon substrate S. It will act upon it, and we get two products, S1 and S2. S1 is exhausted or consumed, and we get S2 as a byproduct. And how long will that enzyme act upon the substrate which is available over there? So for that we have to make a regulation, right? A control by which it would say, okay, enough S1 has been made, enough S1 is been used. So for that reason, what happens? For that purpose, what happens? This S2 will now be accumulated over there. Whenever the S been acted upon enzyme A, the S would be breaking down into S1 and S2, and that S2 will accumulate because it's not been consumed. Only S1 is consumed. Only S1 is required actually. So S2 would accumulate. So there would be a level or a concentration of S2 which would tell the enzyme A to stop the action now. So there is a, the level of S2 which has been accumulated over there in that region would then indicate the enzyme A to stop its action on substrate S. Okay, and what happens now? S2 has made the enzyme A to stop, but when to begin the action again? Now, how does S2 communicates with E, enzyme A? So what happens? They leave the place and they get into the blood sometimes into the lymph, sometimes some cell, sometimes there are different routes, but usually it's been routed through the blood. When the S2 from that region reaches a particular level, a concentration, suppose 10 molecules of S2 will not go into blood. But a time comes when the S2 molecules are accumulated and the number goes to 15. Then what happens? Now this is a threshold, minimum concentration or threshold concentration, which would trigger the S2 to get into the blood. So what happens? Once they reach above the 10 molecular concentration, now the molecules will get into the
bloodstream. So that place will be now slowly vacated by S2. S2 वहां से खत्म होना शुरू हो जाएगा. अब पूरे के पूरे ब्लड में जब चले जाएंगे, जब ब्लड में वापस चले गए, पूरे के पूरे चले जाते हैं, तब क्या होगा? एक समय आएगा कि उन्होंने जाके ई को तो बता दिया कि आपने स्टॉप करना है काम. But now again, that region where S1 is needed, that region is devoid of S2. Now again, the enzyme would start its action on substrate, which is available in that region. यानी कि उस region में enzyme और substrate वैसे ही present था, और enzyme E के कारण वो substrate जो है breakup हो रहा है उसका S1 और S2 में, उसी region में जहाँ पे S1 जो है consume हो रहा है for some purpose, and S2 जो है वो accumulate हो रहा है. But when the S2 accumulation increases a particular level, it will start moving into the blood, and that movement of S2 into the blood will trigger the enzyme EA to stop the action upon substrate S, like that. अब क्या होगा कि slowly the S2 will be like lost or exhausted from this area where the substrate S is being acted by enzyme. तो जैसे ही वहां पे S2 खत्म हो जाएगा, again the enzyme would start acting upon substrate, and then again the substrate will be broken down into S1 and S2. Again the same thing, it will reach up to a state where the S2 will leave the place into the blood, and then again the action will be stopped, and once all the S2 molecules are vacated from that region, again the enzyme would start its function. So this is a kind of regulation as a control, when to allow the enzyme to act upon the substrate and when to stop the enzyme to act upon it. So this is called regulatory enzymes. These enzymes are called regulatory enzymes or the allosteric enzymes. Now, as I told, S2 के हिसाब S2 के कारण ही उसे एक इंडिकेशन मिलता है कि वो एक्शन को रोक दे. So this will be called as a negative feedback. Something is being produced and that something indicates the enzyme to stop its action. So किसी के प्रेजेंस में कोई फीडबैक मिल रहा है, कोई मैसेज मिल रहा है और वो उसे काम करने से रोकता है, तो हम उसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक. और सपोज करिए कि ऐसा ही कोई कंडीशन है जिसके कारण, अब सपोज करिए दूसरी कंडीशन लेते हैं, मान लीजिए वो सबस्ट्रेट पे एंजाइम ए एक्ट कर रहा है और वो सबस्ट्रेट को तोड़ रहा है S0, ठीक है, S0 यानी कि S कोई दो टुकड़े नहीं कर रहा, उसके एक ही टुकड़ा, बट इट्स बीन चेंजिंग इट्स शेप किसी तरीके से, तो S0 में कन्वर्ट कर रहा है. वो S0 जो है वो कंज्यूम हो रहा है वहां किसी एक्शन में, राइट. उसके बाद एक बाय प्रोडक्ट बन रहा है, राइट, एक्शन के बाद. तो कैसा हुआ कि whenever it is required, या फिर कहना चाहिए कि जब S0 बन रहा था और उसके कंजम्पशन के बाद एक दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है which is called Z. तो Z बन रहा है, तो Z का concentration would again might stop the enzyme action. तो ये फिर से कैसा हो रहा है, रोक रहा है. रोकने से क्या हुआ, again a negative feedback. But now consider कि उस S को S0 में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन S पे एक्ट करने के लिए इंडिकेशन कहां से आया. सपोज S0 एक ऐसा कंपाउंड है उस एरिया में जो यूज होने वाला है, लेकिन उसको यूज होने के लिए वो किसी पे एक्ट करता हो. सपोज S0 किसी एक प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है, जिस प्रोसेस में वो एक Y नाम का एक मॉलिक्यूल है जिसको वो बाइंड कर जाता है, और Y नाम के मॉलिक्यूल से जो टॉक्सिसिटी आने वाली थी या जो भी खराब इल इफेक्ट आने वाला था उसको रोकता है. S0 binds with Y and stops the negative effect of Y in that region. For that you need S to be converted into S0 by the enzyme, right? तो ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस है. इसमें अब क्या होगा, कब S0 में कन्वर्ट होगा, जब वहां पे वो जो Y प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट. जैसे ही उस रीजन में Y कंटेंट इंक्रीज होने लगेगा,
तो S को S0 में कन्वर्ट होने की जरूरत महसूस होगी, और ये S को S0 में कन्वर्ट होने के बाद ही S0 उस Y को नलिफाई करेगा। तो फॉर दिस रीजन क्या होगा, अब नाउ कैसे हो रहा है कि Y का कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही उस रीजन में इंक्रीज हो रहा है, इट इज ट्रिगरिंग द एंजाइम टू एक्ट अपॉन सबस्ट्रेट, so it is initiating or triggering the action of enzyme. So it's called positive effect. It is not stopping the action, it is starting the action. That's why whenever the action is being started, the action begins with some messaging from some molecule or some feedback mechanism. That feedback mechanism would be called positive feedback. And if it is something is stopped without feedback messaging, then we call it as negative feedback. Usually these feedback mechanisms are the main basis of regulatory enzymes or the allosteric enzymes. Okay, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Okay, getting it or not? Okay. Yes, sir. Okay. अब जैसे कि हम दूसरे हम कोफैक्टर्स की हम बात कर रहे थे, ये शायद हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कोफैक्टर्स को यूजुअली कोएंजाइम्स भी कहते हैं। कोएंजाइम्स यूजुअली उनको कहते हैं जो यूजुअली ऑर्गेनिक और नॉन प्रोटीनेशियस ओरिजिन के होते हैं, उनके साथ में एसोसिएटेड रहते हैं। जो परमानेंटली अटैच्ड हैं उनको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप्स कहते हैं, और एपोएंजाइम्स मतलब वही है जिसके साथ में कोई कोफैक्टर कोएंजाइम नहीं है। यदि कोफैक्टर या कोएंजाइम और उसके बाद एपोएंजाइम को हम साथ में बोलेंगे, उसको होलोएंजाइम कहते हैं, राइट। ये चीज़ है, यहाँ क्लासिफिकेशन पे नहीं जाएंगे। ठीक है, ये एक पोर्शन था जो हमको थोड़ा सा समझना है आगे चल के, क्योंकि आप लोगों को मैक्रोस्मेंटल इक्वेशन इक्विलिब्रिया जो है उसके बारे में थोड़ा समझना है। तो एक छोटा सा एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करिए। हर एक रिएक्शन में, केमिस्ट्री में भी आपने शायद पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आपने पढ़े हैं। आई वोंट गो इनटू दोज डिटेल्स, बट अब किसी भी एक रिएक्शन को होने के लिए, टू गेट अ रिएक्शन कंप्लीटेड, वी नीड सम एनर्जी। एक कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी की हमें जरूरत पड़ती है जो उन रिएक्टेंट्स को एक प्रोडक्ट में बदलता है। जैसे यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है CO2 + H2O, वो दोनों मिलके HCO3 और H2CO3 जो फॉर्म हो रहा है कार्बोनिक एसिड, तो वो उसके लिए कुछ एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी जो है it's called the activation energy. Enzymes are proteins that increase the rate of reaction by lowering the energy of activation. यानी किसी भी प्रोडक्ट को, सॉरी, किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड सम एनर्जी इन एनी फॉर्म। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, either in the form of temperature, either in form of some ionic equilibria or ionic imbalances, और या फिर हो सकता है वो, और क्या हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, आयनिक इम्बैलेंस होता है, आयनिक चार्जेस हो सकता है, और any other aspect which would accomplish the reaction। कोई और चीजें हैं, प्रेशर हो सकता है, even the pressure would make it happen, make the reactants combine and get into products बनाने में हेल्प कर सकते हैं। So that way, तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ एस्पेक्ट्स है, कुछ फैक्टर्स हैं जो ये बताते हैं कि you need something, some energy in some form to get the reaction complete। and ये reaction completion के लिए हमने फिर ये भी चीज देखी है कि यदि हमने कोई कैटलिस्ट यूज किया, तो कैटलिस्ट यूज करने से एक दूसरा केमिकल है, दूसरा एक सब्सटेंस है, which would participate in converting those reactants into products with a lower amount of energy। यानी कि वो एंजाइम या वो कैटलिस्ट उसे हेल्प करता है कि उस रिएक्टेंट्स को एक लोअर एनर्जी यूसेज के साथ प्रोडक्ट बनाने में, यानी कि ये एनर्जी कंजर्वेशन एस्पेक्ट है ना, एनर्जी कंजर्व की जा रही है।
अब सीधी सी बात है, ह्यूमन आई मीन कोई भी लिविंग सिस्टम है तो वो जिस प्रकार से एनर्जी क्रिएट करते हैं या फिर एनर्जी बना के स्टोर करते हैं, तो वी नीड टू कंजर्व एनर्जी. वी जस्ट कैनॉट वेस्ट आवर एनर्जी विच हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय फीडिंग. हम खाते हैं, उसके थ्रू हम फिर एनर्जी जो फॉर्म करके स्टोर करते हैं, दैट शुड नॉट बी यूज्ड लाइक दैट. should be conserved, it should be properly used, it should be rationed, है ना. वो एक तरीके से यूज करनी चाहिए, जितना कम यूज कर सके उतना अच्छा है, ताकि हम उसको एनर्जी को आगे फ्यूचर यूज के लिए स्टोर किया रख सकते हैं. तो दैट वे तो एक्टिवेशन एनर्जी जो बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी इज द, यू ऑल नो कि वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट है जिससे रिएक्शन जो है कंप्लीट होता है. एंड यदि उस एक्टिवेशन एनर्जी या फिर द रिक्वायरमेंट ऑफ वो जो एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, उसको हम रिड्यूस कर पाए तो इट वुड बी गुड एंड इट विल बी लाइक एनर्जी कंजर्व, या कहना चाहिए कि सेविंग ऑफ एनर्जी कैन बी डन बाय द लिविंग सिस्टम. तो इन दैट्स व्हाई हम हर रिएक्शन को हमारी बॉडी ने, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हर रिएक्शन के साथ में कुछ ना कुछ एसोसिएट किया हुआ है, किसी न किसी एंजाइम को साथ में रखा हुआ है. Either in terms of regulation, like allosteric enzymes जो बोलते हैं, maximum reactions जो कि ऐसे हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं और हमेशा यूज़ होते हैं, तो उनको रखा गया कि कब ज़रूरत है उन चीज़ की, किसके बेसिस पे या कौन से टाइम पे उनकी ज़रूरत है. तो उन चीज़ को उन्होंने रेगुलेट किया है with or without the presence of some other molecule, some other stuff, उसको डिटेक्ट करते हुए एंजाइम्स बनता है. मतलब कि हर रिएक्शन हमारे इसमें एंजाइमेटिकली ड्रिवन है, एंजाइम से ड्रिवन है. एंजाइम जब तक आएगा नहीं वो रिएक्शन अकम्प्लिश नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली वो हो सकता है दैट रिएक्शन माइट टेक मोर एनर्जी, बट एनर्जी व्हेन द एंजाइम पार्टिसिपेट्स इनटू इट, the required amount of energy to accomplish the reaction would be less. So इसीलिए enzymes हमारे हर reaction में, हर metabolic activities में participate करते हैं. That's a evolutionary aspect कि हमने उनको ऐसा अपने आप को ऐसा evolve किया है कि we use the minimum required energy for accomplishing a metabolic reaction. तो देखा ये गया है कि अब लोगों ने बहुत स्टडीज की कि कौन सी चीज़ हमारे बॉडी में होता है. ऐसा है कि दो रिएक्टेंट्स और एक प्रोडक्ट बनाना ऐसा नहीं है. सिंपली हमने बीच में एनर्जी प्रोवाइड कर दी, दोनों रिएक्टेंट्स वो क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं. लेकिन हम यूजुअली, हम हायर एनिमल्स जो हैं, हम वार्म ब्लडेड हैं, तो हम एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करते हैं बॉडी की, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, जिसमें कि मैक्सिमम तरीके से मॉलिक्यूल्स अपने आप को बहुत ही इफिशिएंट और इफिशिएंटली अपनी पोटेंशियलिटी को एग्जिबिट कर सके, राइट. तो वो, लेकिन यूजुअली हमने ऐसे दो रिएक्टेंट्स बना के प्रोडक्ट के ऐसा बनाने का रिएक्शंस नहीं है हमारे पास सबस्ट्रेट, वो एक बेस तैयार पड़ा हुआ है जिसके ऊपर एंजाइम आएगा, एक्ट करेगा, एंड देन वी गेट अ प्रोडक्ट जिसका हमें यूज है. पहले से दो रिएक्टेंट्स ऐसे फ्लोट करते नहीं रहेंगे कि वो दोनों मिल गया हो गया, वो रिएक्टेंट सब एक साथ बैठे रहेंगे. देन दिस कम्स, enzyme comes, it acts upon, it catalyzes, it provides the substrate to use the minimum amount of energy for its activation and getting into products, and we get energy saved. तो देखा ये जाए, जब नॉर्मल केमिस्ट्री, नॉर्मल रिएक्शन में हम जब देखते हैं तो रिएक्टेंट जैसे CO2 और H2O, तो CO2 और H2O के कॉन्सेंट्रेशंस इफेक्ट करते हैं कार्बोनिक एसिड बनाने में. तो ये जो रिएक्टेंट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इफेक्ट करता है प्रोडक्ट्स बनाने में. लेकिन हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में जितने भी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज है, उसमें एंजाइम जब तक सबस्ट्रेट से मिलेगा नहीं, एंड जब तक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करता, उसके बाद प्रोडक्ट बनाएगा. तो वो जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है, दैट इज द मेन कल्प्रिट, दैट इज द मेन फैक्टर व्हिच वुड रेगुलेट ऑल द एंजाइमेटिक रिएक्शंस. एंड यही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है, उसी पे काफ़ी सारी स्टडीज हुई हैं. उसका कंसंट्रेशन इफेक्ट करता है, उसकी अवेलेबिलिटी इफेक्ट करती है, समटाइम्स इट रेगुलेट्स आल्सो द रिएक्शन. ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है. वी वुड स्टडी दीज थिंग्स सब्सिक्वेंटली. तो मेन थिंग था आज के उसमें कि आपको एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है.
अभी मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया है. इफ एट ऑल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दे कैटलाइज नियरली ऑल द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द in the cells of the body. Who? The enzymes, right? उसके बाद enzymes have unique three-dimensional shapes that fit into the shapes of the reactants or the substrate. हम reactants नहीं बोलते, हम substrate बोलते हैं. उनके थ्री डायमेंशनल फिटिंग्स में हमारे enzymes बैठते हैं. इन सब के अपने अपने टर्मिनोलॉजी, जिसको हम कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, शेप एंड साइज एंड फिटिंग सॉकेट्स बनते हैं, जिसको हम लॉक एंड की मेथड से एक्सप्लेन करते हैं. एनीवेज, आज के लिए बस इतना ही. थोड़ा सा एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में आप लोगों को कुछ पढ़ना है केमिस्ट्री में, तो उसको पढ़ लीजिए, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए. वी डोंट नीड मच ऑफ द डिटेल्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, बट फ्यू थिंग्स यू शुड नीड, कि कैसे रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी में कोई फर्क आता है क्या, टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो एक्टिवेशन की एनर्जी में फर्क आता है क्या, या प्रेशर को चेंज करते हैं तो. बट हमारी बॉडी में टेम्परेचर और प्रेशर ऑलमोस्ट एक जैसा रहता है. तो वी हैव कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नाउ ओनली, एंड दैट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट इज द मोस्ट ऑप्टिमल एनवायरनमेंट फॉर एनी रिएक्शन टू गेट कैरिड ऑन. सो इसलिए सिर्फ एंजाइम और उसकी अवेलेबिलिटी, या फिर कहना चाहिए कि हम हमेशा एक बॉडी के अंदर में एक ऐसे एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रखते हैं जिसमें रिएक्शंस होने ही है, बट हमने उनको रेगुलेट करना सीख लिया है, हमने उनको एलोस्टेरिक बना दिया है. ठीक है, तो थोड़ा सा एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में आप लोगों को कहीं पढ़ना है तो थोड़ा सा पढ़िएगा. एंड हम रिएक्टेंट्स के नाम पे सबस्ट्रेट और एंजाइम के कॉन्सेंट्रेशंस एज सच इफेक्ट नहीं करते हैं इन द रिएक्शन, बिकॉज एंजाइम और सबस्ट्रेट को हम अलग इसलिए काउंट नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में एक ऑप्टिमल या फिर एक फेवरेबल कंडीशन बनाया हुआ रखा हुआ है. वी नीड टू रेगुलेट देम, उनको हम कंट्रोल करते हैं, एंड व्हेनेवर वी नीड इट तभी हम उसका फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं या दैट इज बीइंग कैरीड आउट. इसलिए एंजाइम्स तभी एक्ट करते हैं जब वो रिक्वायर्ड है किसी प्रोडक्ट की, रिक्वायरमेंट है किसी प्रोडक्ट की. ओके, आज के लिए दैट्स ऑल. फिर मिलेंगे अपन मंडे को. ओके, that's all for today. Thank you very much.